Now let us just revise. So gamma function was 0 to infinity x to the power of alpha minus 1 e to the power of minus x dx, where alpha was greater than 0. And we split it into two parts. One was 0 to c x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx, plus c to infinity x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx, where c lies between 0 to infinity. This we named as I1 and this we named as I2. I1 we discussed the convergence yesterday. Now for I2 we have to discuss the convergence. Clear everybody? I am audible to everybody here. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So now for I2, I2 is c to infinity x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus 6 dx. Now if c is less than 1, then we can again decompose this integral from c to 1 e raised to the power of x minus 1 alpha minus 1 e raised to the power of minus x and dx, plus 1 to infinity x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx. Now this is again a proper integration, and this is improper integral of first kind. So we need to discuss the convergence of this integral only. Okay? So if c is less than 1, again we get an integral of improper integral of first kind. So we can assume that c is greater than equal to 1. So therefore, because if c is less than 1, this component does not contribute in the nature of the integral. So therefore, we are assuming that we write it as without loss of generality. Let c is greater than equal to 1. Now let n be a natural number such that n is greater than alpha minus 1. Alpha is positive real number. Then alpha minus 1 is less than n. So x to the power of alpha minus 1 is less than x to the power of n. So this implies x to the power of alpha minus 1 into e raised to the power of minus x is less than x to the power of n into e raised to the power of x, where x lies between 1 to infinity. So what does this mean? This means that integral c to infinity x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx, this is less than c to infinity x to the power of n e raised to the power of minus x dx. ठीक. मैम So if we ऊपर वाले लाइन show में that, हाँ माइनस होगा. ठीक. So now this integral is less than this. So if we show that the bigger integral is convergent, then this will also be convergent. So now coming to this, what is the definition of this? So this is limit b tends to infinity integral c to b
x to the power of n e raised to the power of minus x dx. Again, just c to infinity x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx. This is less than what we are writing. This is equal to limit b tends to infinity. Now, what we get? We get e raised to the power of minus x into some polynomial after we integrate polynomial of degree n in x. What is this? Suppose this is Pn x. Take. So we are taking the limit of, after you integrate, you get something of this type, e raised to the power of minus x into some polynomial of degree n in x. See, so we write it as x Pn x. So just write Pn x. See? So when we put the limit from b to c, see? So after this, you put the limit from c to b. So what you get? Limit b tends to infinity. We are not integrating, we are just writing e raised to the power of minus b into जो भी polynomial आएगा उसकी value at the point b minus e raised to the power of minus c into जो भी polynomial आएगा उसकी value at the point c. यही आना है. ठीक. Now you take the limit as b tends to infinity. So as b tends to infinity, this e raised to the power of minus b, this is equal to 0. And no change in this part. So we get this is equal to e minus e raised to the power of minus c into Pn c, जो भी polynomial आएगा. So you are getting the value. So therefore, since the bigger integral is convergent, the lower integral will also be convergent. So this implies I2 converges for alpha greater than 0. Now you read the proof. If you have any confusion, then you can ask. So hence, gamma alpha, this is equal to 0 to infinity, x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx, alpha positive is convergent. For all the values, we have shown that this is convergent. So clear to everybody? Now coming to some identities of gamma function. Gamma of 1. Now put the value of alpha is equal to 1 in the formula. So
we get 0 to infinity e raised to the power of minus x. Put alpha is equal to 1, so this will become 1 dx. And what is the value of this integral? 1. So therefore we take gamma of 1 is equal to 1. Second is gamma of alpha plus 1. So this is equal to 0 to infinity. Now put in place of alpha, you put alpha plus 1 in the formula. So you get x to the power of alpha e raised to the power of minus x dx. ठीक, अल्फा माइनस 1 की जगह हमने रखा अल्फा प्लस 1 माइनस 1. Now integrate this. So we have minus x to the power of alpha e raised to the power of minus x from 0 to infinity. ठीक, e raised to the power of minus x को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लिमिट रखी, प्लस नाउ इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 to infinity x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx. ठीक, अपर लिमिट रखेंगे तो e रेज टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वजह से ये 0, एंड लोअर लिमिट रखेंगे सो x की वजह से ये 0. so this value is always 0. so this value is equal to 0. so what you get, alpha times, now what is this integral? This is again gamma alpha. So this is what we have used in solving the integrals previously. Gamma times alpha plus 1 is alpha gamma alpha, where alpha is any real number. See, so alpha is a real number. Now, if alpha is a integer, then alpha gamma of m plus 1 is m factorial, where m is a positive integer or a natural number. Now, let us check this. Now, what is gamma m plus 1? This will be m times by the equal identity number 2. This will be m gamma m. Now again, what will be gamma m? M into m minus 1 into gamma m minus 1. ठीक, again this will be m into m minus 1 into gamma m minus 2. ठीक, तो इस तरह से हम करते चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, m into m minus 1 into m minus 2 and so on up till gamma 1. ठीक, होता चला जाएगा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा 1? दिस इज 1. so this is m into m minus 1 into m minus 2 so on 2 into 1. what is this? This is m factorial. Clear everybody? Now fourth is gamma half. This we have used that gamma half is equal to root pi. Now we will see how it is equal to root pi. So gamma half is equal to 0 to infinity. Put alpha is equal to half. So half minus 1 means x to the power of minus half e raised to the power of minus x dx. Now you integrate this. Now do some substitution. Let x is equal to u square. So gamma half will be 2 times 0 to infinity e raised to the power of minus u square du. ये हो जाएगा, ये u आएगा, ये
2u du आएगा, तो हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा हाफ होल स्क्वायर? दिस विल बी means gamma half into gamma half. So this will be 4 into 0 to infinity, 0 to infinity, e raised to the power of minus u square plus v square du dv. ठीक, now we put again, put u is equal to r cos theta and v is equal to r sin theta. So gamma half whole square, this is equal to 4 times r e raised to the power of minus r square dr. ठीक, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, dr d थीटा। ठीक है, du dv विल बी r dr d थीटा, ये हम लोग देख चुके हैं। नाउ मैम व्हाट ये आर द लिमिट्स ऑफ क्या किया है? वो स्क्वायर किया है। सेकंड लास्ट लाइन क्या किया मैम आपने स्क्वायर करके? इंटीग्रेशन स्क्वायर करके ये वाला। मैम मैम डबल इंटीग्रेशन है ना जहाँ पे वहां पे। हाँ हाँ, तो जब मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटीग्रेशन इनटू दूसरा इंटीग्रेशन आएगा तो इंडिसेस जुड़ेंगी नहीं। e raised to the power of minus u square into e raised to the power of minus v square आएगा, तो जोड़ नहीं जाएगा। ओके मैम। Now put the limit of r and theta. So r varies from 0 to infinity and theta varies from 0 to pi by 2. ठीक, u varies from 0 to infinity and v varies from 0 to infinity. वहां से निकालोगे लिमिट्स, so this is equal to 2 pi, पहले इसके रिस्पेक्ट में r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, 0 to infinity r फर्स्ट हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। ये लिमिट्स भी उल्टी हो जाएंगी फिर। जीरो टू इंफिनिटी, 0 to pi by 2। ठीक, तो फर्स्ट वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई, थीटा पे कोई डिपेंडेंट नहीं है तो सिंपल थीटा आएगा, लिमिट रखोगे 0 to pi by 2, तो वी गेट 2 पाई 0 to infinity r e raised to the power of minus r square dr। नाउ r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, so this will equal to minus pi e raised to the power of minus r square and put the limits from 0 to infinity, so this is equal to pi, infinity पे 0 and 0 पे 1। so gamma half का whole square is equal to pi, so this implies gamma half is equal to under root of pi। ठीक है, मैम जब स्क्वायर किया तो अलग वेरिएबल क्यों ले ली?
अरे अलग वेरिएबल तो लोगे ही ना, दो इंटीग्रल्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को एक ही ले लोगे। 0 to infinity raised to the power of minus u square du है। अब दूसरा जब करोगे 0 to infinity raised to the power of minus ये v square dv, हाँ, एक ही वेरिएबल ले लोगे तो u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2u स्क्वायर नहीं हो जाएगा, जबकि ये पूरा वेरी कर रहा है, ये भी पूरा वेरी कर रहा है। दोनों को एक ही वेरिएबल कैसे ले सकते हो? ओके मैम। Okay. Now fifth inequality is gamma of minus half is equal to minus 2 root pi. Similarly आप माइनस हाफ की भी वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग द इनइक्वालिटी गामा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा गामा अल्फा प्लस 1, तो गामा अल्फा इज गामा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। नाउ पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो हमें गामा माइनस हाफ की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2 टाइम्स रूट पाई। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ इस फॉर्मूले में रखो, मिल जाएगा। Now next is beta function. Now what are the use of these gamma functions? It comes in the evaluation of integrals. Now, like one or two examples we have solved previously using gamma function. More you can find in the book. Now coming to the beta function. Now what is a beta function? Beta function we write in the form of beta mn is equal to 0 to 1 x to the power of m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1 dx, where m is positive, n is positive. Now this is a beta function. Now we have to discuss the convergence of this beta function. Now again this beta function is used in the evaluation of integrals. Convergence of beta function. Now for now let us see for m greater than equal to 1 and n greater than equal to 1. This beta mn is a proper integral. ठीक, देखो अगर m greater than equal to 1 है, now you calculate the limit as x tends to 0, तो 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, अगर बड़ा है तो ठीक। सिमिलरली अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस एक्स भी, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एज x टेंस टू 1 यहाँ पे। ठीक,
सारे के सारे न्यूमरेटर में ही चले आए, तो न्यूमरेटर में 0 हो गए तो फंक्शन डिफाइंड हो गया। प्रॉब्लम कब होगी? जब n लेस देन 1 हो, नीचे पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में, तब जब एज x टेंड्स टू 0 इसकी लिमिट इंफिनिटी हो जाएगी और ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली n जब लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो एज x टेंड्स टू 1 ये जो हमारा फंक्शन है ये डिनोमिनेटर में पहुंच गया, n लेस देन 1 है जब, ठीक, पावर की वजह से। तो एज x टेंड्स टू 1 इस वाले की लिमिट सेकेंड वाले फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। So when m is less than 1 and n is less than 1, this integral turns out to be improper integral. Otherwise, when m is greater than 1 and n is greater than 1, then both these terms are in the denominator and their limit will be 0 as x tends to 0 and x tends to 1. That is, the function will be defined and this will remain as the proper integral. So is this clear to everybody? Yes, ma'am. Clear hai? Yes, ma'am. So now beta mn has points of infinite discontinuity at पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 हो और m लेस देन 1 हो, फर्स्ट पॉइंट की वजह से, ठीक, x 0 पे हो और m लेस देन 1 हो, और दूसरा x इज इक्वल टू 1 हो और n लेस देन 1 हो, ठीक, दूसरा x इज इक्वल टू 1 हो और n लेस देन 1, ठीक। नाउ हम दोनों मान लेते हैं, लेट m इज लेस देन 1, n इज लेस देन 1 एंड c बिलोंग्स टू 0 1, देन हमारा बीटा mn क्या हो जाएगा? बीटा mn विल बी 0 to c x to the power of, now we are decomposing 0 to 1 into 0 to c x to the power of m minus 1 1 minus x n minus 1 dx plus c to 1 x m minus 1 1 minus x की पावर n minus 1 dx, ठीक। क्यों किया हमने ऐसा? ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज हमें अलग अलग पार्ट्स की जो डिसकंटिन्यूटी है वो अलग अलग इंटीग्रल्स में मिल जाए। इन द फर्स्ट इंटीग्रल this is an improper integral of second kind due to this term, and in the second integral this is an improper integral of second kind due to this term, ठीक। So suppose this is I1 and this is I2. Now this is improper integral of second kind. क्यों? Since x is equal to 0 is point of infinite discontinuity, and this is again improper integral of second kind. क्यों? Since x is equal to 1 is point of infinite discontinuity. Continuity. So again we will discuss the convergence for I1 and I2 separately. Okay. Now for I1, let
fx is equal to x to the power of m minus 1, 1 minus x की power n minus 1, and gx is equal to x to the power of m minus 1. Now you take the limit as x tends to 0 plus. We cannot go in the left hand side. So we are taking the right hand limit only. Fx upon gx. So you take the limit. Limit क्या आएगी जल्दी से बताओ. Fx upon gx as x tends to 0. 1. 1 आएगी. 1 ma'am. This is 1. So this is not equal to 0. So therefore, by comparison test, both fx and gx will have, the integrals of fx and gx will have same nature. Now, and 0 to c, gx dx, this is 0 to c, gx upon x to the power of 1 minus m. This is convergent. Why? When 1 minus m is less than 1. This we have studied. इसकी हमने कन्वर्जेंस देखी है सबसे पहले. और m is greater than 0. So therefore, by comparison test, of integrals, I1 is convergent when m is greater than 0. ठीक. 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, बिकॉज 1 से छोटा हमने मान के चला है. ठीक. Now for I2, similarly, let fx is equal to x to the power of m minus 1, 1 minus x की power n minus 1, and gx is equal to 1 minus x की power n minus 1. Now you take the limit as x tends to 1. Now you have to within the interval 0 1, 0 1 interval में रहना है, 1 के बाहर नहीं जा सकते. So therefore we take the left hand limit, not the right hand limit. Now fx upon gx. Now you take the limit x tends to 1 minus, निकालो क्या आएगा, m minus 1. This is again 1. ठीक. And c to 1 dx upon 1 minus x की power 1 minus n. This converges if 1 minus n is less than 1 or n is greater than 0. So therefore, by comparison test, of integrals, I2 is convergent for n greater than 0. So combining both, thus beta mn is convergent for m greater than 0 and greater than 0. और हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में m greater than 0 and greater than 0 माना हुआ है. So therefore our beta function is always convergent.
ठीक. Now coming to some identities of beta functions. First is beta mn is equal to beta nm. Both are equal. Second is beta mn is equal to 2 times 0 to pi by 2 sine 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta. And this is equal to 2 times 0 to pi by 2 sine 2n minus 1 because beta mn is equal to beta nm. So therefore, theta cos 2m minus 1 theta d theta. Third is beta mn is equal to 0 to infinity x to the power of m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx. Fourth is beta mn is equal to gamma m gamma n upon gamma m plus n. This you can show by yourself very easily. Beta mn is equal to beta m plus 1 n plus beta m n plus 1. Now first find the value of this and then find the value of this, then you add, then you easily get this. So these two you can do by yourself, and rest you can just learn the formula. Now coming to the questions, how we solve the question using beta and gamma functions. Given that 0 to infinity x to the power of p minus 1 upon 1 plus x dx is equal to pi upon sine p pi. This is given. Now show that gamma p into gamma 1 minus p, this is equal to pi upon sine p pi. This you have to show. Now, first of all, we don't have, look at this integral, we don't have the e raised to the power of x term in this integral. So therefore, this means that if we adjust this integral in the form of x to the power x into 1 minus x form, then we can use this as gamma, as beta function. And of course, the limits will also change then. So do some adjustment to change this integral. So what we do, let x upon 1 plus x, this is equal to y. So this implies x is equal to y upon 1 minus y. Okay. And this means dx is equal to 1 upon 1 minus y whole square into dy. So now coming to the integral, 0 to infinity x to the power of p minus 1 upon 1 plus x dx.
अब इसे चेंज करो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, y की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 माइनस y की पावर p माइनस 1 into y by x dy. Now put the limit of y. So when x is equal to 0, y is equal to 0. And when x is equal to infinity, y is equal to 1. So this is equal to 0 to 1, y की power p minus 1, 1 minus y की power minus p dy. Now this is a beta function. Of which type? This is beta p 1 minus p. है ना, बीटा mn की जगह रख के देखो, यही मिलेगा। यहाँ पे 1 माइनस m आना चाहिए था, जो माइनस p लिखा हुआ है, सो यू पुट 1 माइनस p एंड देन यू गेट द वैल्यू। ठीक, now using the inequality number 4, this is equal to gamma p, gamma 1 minus p upon gamma this plus this, so p plus 1 minus p, so this is equal to gamma p into gamma 1 minus p, यही दिखाना था आपको। उस इंटीग्रल की वैल्यू तो दी हुई है। ठीक, एक और क्वेश्चन कर ले इस पे, ये क्लियर हो गया ना। यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन, evaluate -1 to 1 1 minus x square की पावर n dx, n is a natural number. Again you can convert it into a beta function. इंटीग्रल हमारा ये दिया है -1 to 1 1 minus x square की पावर n। ठीक, तो यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, लिख दे डायरेक्ट यहाँ पे। तो दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब ये वाला काम तो हो गया, लेकिन अभी ये वाला बाकी है 1 प्लस एक्स वाला, तो इसका सब्स्टिट्यूशन करने, लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2t, so this implies dx is equal to 2 dt. And what is the value of 1 minus x? This will be 2 times 1 minus t. x की वैल्यू रख लो, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, 2 to the power of 2n plus 1 0 to 1 t to the power of n 1 minus t की पावर n dt. Now what is this? 2 to the power of 2n plus 1 beta n plus 1 n plus 1. ठीक, अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बीटा को गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज वी नो द वैल्यूज ऑफ गामा फंक्शंस। So this is equal to 2 to the power of 2n plus 1 into gamma n plus 1
gamma n plus 1 upon gamma n plus 1 plus n plus 1. So we have 2n plus 2. Now what is gamma n plus 1? N is a positive integer. It is given. So this will be n factorial into n factorial upon 2n plus 2. ये भी एक integer होगा. So this will be 2n plus 2 factorial. Sorry, 2n plus 1 factorial. एक कम होगा ना? 2n plus 1 factorial. Yes, ma'am. So this is the answer. मैम हर बार आखिरी में इसको मैम गामा फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज पता है उनकी। हाँ, क्योंकि बीटा फंक्शंस की वैल्यूज नहीं पता है ना, अदरवाइज तुम्हें उसे रख के और इंटीग्रेट करो, और गामा फंक्शन की वैल्यूज पता है तो देयरफॉर उसे कैलकुलेट करना इजी है। ठीक, बाकी लिबनिट्ज फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ेंगे। मैम जहाँ कन्वर्जेंस के लिए देखते हैं वहां पे डिनोमिनेटर की पावर लेस देन 1 क्यों करते हैं? लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी ना, डिनोमिनेटर लिमिट निकाल लो। अगर सब कुछ न्यूमरेटर में ही है और न्यूमरेटर 0 हो रहा है तब तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना। फंक्शन तो तब नहीं एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तभी तो इन्फिनिटी आएगी लिमिट। सेकेंड काइंड में क्या होता है? फर्स्ट काइंड में तो कोई इंटीग्रल की कोई एक अपर लिमिट या लोअर लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जानी चाहिए, लेकिन सेकेंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड में क्या होता है कि लिमिट्स तो दी रहती है पर अंदर वाला फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है। डिफाइन ना होने का मतलब कि फंक्शन इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कब होगा? जब न्यूमरेटर में अगर सब कुछ 0 हो रहा है तो फंक्शन इनफाइनाइट थोड़ी होगा। फंक्शन तो इनफाइनाइट तब होगा जब डिनोमिनेटर में कुछ 0 हो जाए, तो देयरफॉर हम नीचे पहुंचाते हैं उसे। तो सिंपल है। मैम उसके लिए तो 0 की इक्वल करना चाहिए। हैं तो वो 0 ही तो कर रहे हैं।